मनोज क्लास स्टार्ट होचे टिके गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से वापस हम लोग सीसैट का जीएस पेपर 2 का कॉम्प्रिहेंशन पेपर लेके आज हम लोग फर्दर कंटिन्यू करेंगे विथ न्यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, राइट। और उसमें आज हम न्यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में पहला जो देखेंगे वो आपका है पैसेज नंबर 14। पैसेज नंबर 14 क्या बोल रहे हैं? अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ ऑल फ्लावरिंग प्लांट स्पीशीज आर पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स। सो पॉलिनेटेड बाय एनिमल्स, ओके। तो ये वाला चीज जरूरी है जानना, पॉलिनेटेड बाय animals, including birds and mammals, but the main pollinators are insects. Pollination is responsible for providing us with a variety of food as well as many plant-derived medicines. यानी variety of food देता है और plant-derived medicines देता है. At least 1/3 of the world's agricultural crops depend upon pollination. Bees are the most dominant taxa when it comes to pollination. Bees जो है, मधुमक्खी जो है, वो सबसे ज़्यादा pollination में हेल्प करता है. And they are crucial to more than 400 crops. 400 से भी ज़्यादा क्रॉप के लिए वो crucial है. Pollination is an essential service that is the result of intricate relationship. Intricate means complicated. Complex. Intricate is complex. Complex relationship between plants and animals. And the reduction of loss of either affects the survival of both. ये दोनों अगर कम हो जाता है तो दोनों का सर्वाइवल, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का प्रॉब्लम हो जाता है. Effective pollination requires resources such as refuges of pristine natural vegetation. यानी बहुत ज़्यादा हरियाली होना चाहिए जिससे कि पॉलिनेशन और ज़्यादा हो, राइट. On the basis of the passage given above, the following assumptions have been made. Sustainable production of Indian cereals food grain is impossible without the diversity of pollinating animals, right. So बोल रहे हैं कि sustainable production of Indian cereal food grains is impossible without the diversity of pollinating animals.
सो assumption क्या है? is impossible without, ये जो बोला है is impossible without, ये वाला चीज गड़बड़ है. This is once again a strongly worded statement. Next is monoculture of horticultural crops hamper the survival of insects. Right. मोनोकल्चर ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, एक ही टाइप का क्रॉप का अगर हम कल्चर करते हैं तो हैम्पर्स द सर्वाइवल ऑफ इंसेक्ट. ये वाला जो पॉइंट है, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा. दूसरा वाला जो पॉइंट है ये आउट ऑफ परव्यू, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं है. आउट ऑफ परव्यू ऑफ द पैसेज. Pollinators become scarce in cultivated areas devoid of natural vegetation, जो कि लास्ट पैसेज में, लास्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ में बोला गया है. पॉलिनेटर्स वहाँ आते नहीं हैं जहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन ग्रो नहीं करता है, क्योंकि उनको एक पेड़ से, एक पौधे से दूसरे पेड़, दूसरे पौधे पे जाना है, तो वो लोग वहाँ नहीं आते. सो 3 इज डेफिनेटली वन ऑफ द ऑप्शन. Diversity in insects induces diversity of plants. Obviously, different types of insect, different types of pollination करेगा, तो वो भी हमारे लिए important है. Right. So, devoid of natural vegetation जो word है, ये हमें help कर रहा है थर्ड को चूज करने के लिए. Diversity जो word है, ये हमें फोर्थ चूज कर रहा है फोर्थ को एक्सेप्ट करने के लिए. So, the answer is D. 3 and 4. नेक्स्ट पैसेज है a study conducted on the impact of climate change over the Kaveri basin of Tamil Nadu using regional climate models. Right. So, what has been used? Regional climate model has been used. Showed an increasing trend for maximum and minimum temperatures and a decrease in the number of rainy days. So, increase in maximum minimum temperatures and decrease in the number of rainy days. These climatic shifts will have an impact on the hydrological cycles in the region, lead to more runoff and less recharge. Right. ज़्यादा पानी निकल जाएगा, less recharge. More runoff, less recharge. And affect the groundwater tables. Further, there has been an increase in the frequency of droughts. Increase in the frequency of droughts in the state. This has driven farmers to increase dependency on groundwater resources to secure their crops. So, farmers का क्या हुआ है, डिपेंडेंसी बन गया है, बढ़ गया है ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. राइट. विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द क्रक्स. क्रक्स मीन्स सेंट्रल आइडिया. राइट. नंबर 1 इज development of regional climate models helps in choosing climate smart agricultural practices. This has not been told here. ये भी यहाँ पर बताया गया नहीं है. Development of regional climate models, right? Increasing climate models in choosing smart agricultural practices. यहाँ पर बोला जा रहा है study conducted on the impact of climate change over the Kaveri basin using regional climate models. But development of regional climate models का कोई जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है. So A is not the answer. Heavy dependence on groundwater resources can be reduced by adopting dryland cropping system.
Now, dryland cropping system has never been mentioned. Farmers' dependency on groundwater has increased, but that doesn't mean you cannot extrapolate and say that dryland cropping system इस चीज को reduce कर सकता है, right, by adopting it, because that has not been mentioned anywhere. So it is out of the purview of the passage. Out of the purview of the passage. Climate changes increase the criticality of water resources while simultaneously threatening it. Right? Climate changes increases the criticality of water resources. This has been discussed. The second part from these climatic shifts, right? यहाँ से लेके जो शुरू हुआ है, यहाँ पर वही चीज़ डिस्कस किया जा रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स वगैरह. क्रिटिकलिटी ऑफ वाटर रिसोर्सेज जो है उनका क्रिटिकलिटी बढ़ा देता है एंड साथ में उसको थ्रेट भी करता है, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज कम हो जाता है क्लाइमेट चेंजेस के जरिए, जबकि लोग पंप करते रहते हैं ग्राउंड वाटर, एंड ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज का डिप्लीशन होता है, एक्विफायर कम हो जाता है, उनका टेबल जो है वो कम हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच वाटर स्केर्सिटी दिखता है. सो सी इज द most appropriate answer, but we have to see D before we finally choose it. The climate change caused the farmers to adopt unsustainable livelihoods and risky cropping strategies. Unsustainable livelihood. Livelihood has not been discussed in this passage. ये discuss हुआ ही नहीं है. So naturally, this cannot be the option. This is once again, out of the purview of the passage. So this passage was on the depletion of water resources, hydrological cycle ka imbalance, and it also provides instances of droughts और साथ में जो डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज. तो ये 3-4 चीज़ों के ऊपर ये पैसेज बना हुआ है. So this is how the passage goes. Researchers, passage 16. Researchers were able to use stem cells to gauge the neurotoxic effect of the environmental pollution. So stem cells use हो रहा है क्या गेज करने के लिए? गेज इज टू मेजर the neurotoxic effect of the environmental pollutant bisphenol. They used a combination of biochemical and cell-based assays. Assay is it's a specialized test. Actually test method. To examine the gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA, that is bisphenol A. So ये gene expression profile during the differentiation of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA, a compound known to cause heart diseases. The compound, it's a neurotoxic device, chemical which is the cause of heart diseases, diabetes, and development abnormalities in humans. Maybe stunted growth, maybe
it generates clinical idiots out of people. In vivo, right? Yes, it can, because here they are talking about difference of mouse embryonic stem cells upon treatment with BPA. So it may alter, because initially it has talked about neurotoxic effects and examine the gene profile differentiation, because the gene is probably going to change with the effect of the extrapolation. We are assuming such thing without any hint given in the passage. This is extrapolation. We are assuming something and placing it on something else without being supported by any information from the passage. Embryonic stem cells could serve as a model to evaluate the physiological effects of environmental pollutants. Right? Yes, it can. Because it can serve as a model. The second part में वही बता जा रहा है, when we are able to detect and measure BPA toxicity towards the specification, proper specification, so that is talking about evaluate the physiological effect of the environmental pollution. So इसको evaluate करना environmental pollution पर. So 1 and 3. 1 and 3 is the answer. Very, very highly specialized. If you have an opportunity of leaving this passage, अगर आपको एक opportunity होता है exam, Passage 17. Medieval merchants risked the hazard of the Silk Road to reach the markets of China. कौन सा रोड से? Silk Road से. Portuguese caravels in the 15th century sailed beyond the bounds. Caravels are big boats. Sail beyond the bounds of the known world, searching less for knowledge than for golden spices. वो कहाँ कहाँ चले जाते थे, in search of golden spices. Historically, the driver for opening frontiers has always been the search for resources. This is very important. Historically क्या था? The driver for opening frontiers has always been the search for resources. नया कोई जगह ढूंढने से वहाँ से रिसोर्स ढूंढना was always very important. Science and curiosity are weaker drivers. विज्ञान और उत्सुक होना वो उतना ड्राइव नहीं करता है. The only way to open up space, whether the space of solar system or interstellar space, is to create an economic engine, and that engine is resource extraction. To create an economic engine, and that engine is resource extraction. यानी कोई भी नया जगह अगर हमें ढूंढ निकालना है, राइट, उसका सबसे बड़ा जो ट्रिगरिंग फैक्टर होता है, द ट्रिगरिंग फैक्टर इज क्रिएटिंग एन इकोनॉमिक इंजन. यानी वहाँ से कमाई आएगा और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, वहाँ से हम कुछ चीज़ें निकाल पाएंगे. एंड इफ़ यू सी हिस्टोरिकली, आप अगर देखोगे तो ऐसा ही रहा है ना. आप देखो, इन केस ऑफ any voyage or any odyssey which has been taken up,
फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड. पोर्चुगीज हमारे देश में आए थे, फ्रेंच हमारे देश में आए थे, ब्रिटिश तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. दे ऑल केम फॉर टेकिंग अवे रिसोर्सेज फ्रॉम दिस कंट्री, नथिंग एल्स. देयर वाज नो साइंस, देयर वाज नो एक्सप्लोरेशन, राइट. देयर वाज नो क्यूरियोसिटी कि उस देश में क्या है वो थोड़ा जाके जाने, नथिंग. इट्स प्योरली उन्होंने पहुंचे एंड सेरेंडिपिशियसली उनको रिसोर्सेस मिला, उस देश में रह गए. एंड इंडिया वाज अ लैंड ऑफ अनलिमिटेड रिसोर्सेस, राइट. तो उसको वो लूटने आए. और आज की डेट में ब्रिटेन मतलब ऑलमोस्ट 40% इज मेड अप ऑफ ट्रेजर विच वाज लूटेड फ्रॉम इंडिया, राइट. आप लोग शशि थरूर का बुक है एन ईरा ऑफ डार्कनेस, उसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको बढ़िया से उसके ऊपर एक वर्णना मिलेगा, राइट. सो this is the passage which talks about the exploration and the voyages and why people used to move to new land. जो अलग अलग न्यू लैंड अलग अलग जगह पे. Which one of the following statements best sums up? यानी this one is talking about the summary. This one is talking about the summary. Wealth generation is the primary motive for any human endeavor. Wealth generation is the primary motive for any human endeavor. This is, a statement which has fallacy of generalization. Spade whether space in solar system or interstellar space will govern our future economy. Once again, an extreme statement. This is once again an extreme statement. Nowhere hinted in the passage. An extreme statement. Human beings are motivated to explore new frontiers principally by economic considerations. यही चीज मैं आप लोगों को बताया ना. It is पैसा and paisa through resource extraction. So this is absolutely how the perfect statement. And if we look into the pages of history, right, यही चीज हो रहा है, मतलब हुआ है, sorry, I mean to say हुआ है, right, over a period. And आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री में देखोगे तो फ्रॉम अराउंड 1300 years ago approximately लेके up till the late 20th, up till the late 19th century, यही चीज तो हुआ है दुनिया भर में. द ब्रिटिश हैज बीन द मोस्ट सक्सेसफुल, राइट. Wealth generation is based on the risk-taking behavior of some men. Now this also is, a statement which is fallacy of generalization. Right, motivated generation. That is what has been said. So talking about human explorations and human voyages. Next we'll go to passage 18. Most people would agree that telling deliberate lies
Deliberate is willful. Is wrong, except perhaps in certain special situations when more harm will be done by telling the truth. Is more important. Even the most truthful people probably tell a good many more lies that might be regarded as semantic lies. Their use of words contain some measure of falsehood, more or less deliberate. So sometimes it is important, ज़रूरी होता है कि झूठ बोलना, राइट? और वो झूठ कब बोलते हैं? जब लगता है कि सच बोलने से कुछ नुकसान पहुंच सकता है, राइट? और क्या है, वो जो मतलब देयर आर मेनी पीपल जो कि आमतौर पर सच बोलते हैं, और वो जब वो झूठ बोलते हैं उनको सेमांटिक लाई बोलते हैं. दैट्स नॉट अ ट्रू लाई, राइट? देयर यूज ऑफ वर्ड, सेमांटिक्स इज यूज ऑफ वर्ड्स, कंटेन सम मेजर ऑफ फॉल्सहुड, मोर और लेस डेलिबरेट. जानबूझ के वो थोड़ा बहुत चीज को फॉल्स बोलते हैं, ठीक है? द आइडिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज मेंशन्स. अभी देखिए सवाल कुछ दूसरी तरफ का हो रहा है. आइडिया इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज. फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज क्या बोल रहा है? एग्रीमेंट अबाउट टेलिंग लाइज, बिकॉज इट इज सेइंग दैट मोस्ट पीपल वुड अग्री. So definitely first part is talking about agreement of telling lies. Disagreement of telling lies. First part is not talking about disagreement about telling lies. Disagreement about telling the truth. No, it is not disagreeing about telling the truth. It is saying that more harm can be done, but it is not disagreeing. Disagreement about the harm in telling truth. It is not disagreement, it is agreement about the harm in telling truth in some cases. So these are all either contrast or incorrect, contextually incorrect. So passage 18 is talking about the use of truth or untruth, not lies, under certain situations. Now we will get into the next passage. Next passage is passage number 19. Passage number 19. क्या बोल रहे हैं? Can a democracy avoid being a welfare state for long? Basically, democracy is supposedly a welfare state, जहां पर आमतौर पर इंसान जो है रहते हैं उनका भलाई देखा जाता है. Why cannot mass welfare be left entirely to the markets? Passage, this is an argumentative passage where the author says that mass welfare जो हैं, आम जनता को जो भलाई है, उसको मार्केट के ऊपर छोड़िए ना, सरकार को उसमें हस्तक्षेप करने का कोई जरूरत नहीं है. There is a built-in tension between market and democracy. मार्केट और डेमोक्रेसी के बीच में एक built-in tension,
सो ऑलवेज एक उनके बीच में एक द्वंद्व टाइप का रहता है. Markets do not work on a one person one vote principle as democracies do. हम क्या करते हैं, एक इंसान इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो चाहे राज्य के लिए हो, चाहे देश के लिए हो, पार्लियामेंट में हो, और उनके लिए एक वोट होता है. राइट. मार्केट्स डू नॉट वर्क ऑन अ वन पर्सन वन वोट प्रिंसिपल एज डेमोक्रेसी. मार्केट वैसे काम नहीं करता. What one gets out of the marketplace depends on one's endowment's skill. Purchasing power and the force of demand supply, wonderfully said, depends on one's endowment skills. कैसे उनका skills है जिससे कि वो काम कर सके. पैसा कमाते हैं तो उसका परचेज पावर क्या है, वो खरीद सकते हैं क्या. राइट. खाना, सिंपल खाने के आगे और कुछ खरीद सकते हैं क्या. एंड द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इसी के ऊपर मार्केट डिपेंड करता है. ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट चीज है. मार्केट्स रिवॉर्ड इंडिविजुअल इनिशिएटिव एंड स्किल. अगर कोई इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेता है, स्किल्स को अप्लाई करते हैं, तो उनको मार्केट रिवॉर्ड करता है. एंड मे ऑल्सो लिफ्ट मैनी फ्रॉम द बॉटम रंग्स ऑफ द सोसाइटी. और उस तरह से अगर किसी में स्किल है, अगर किसी में टैलेंट है, तो वो नीचे से उठ के आ सकते हैं. आज की डेट में आप देखो, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में, हर जगह पे आज हमारे जो प्रेसिडेंट थे, वेरी वेरी रेस्पेक्टेबल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आज हमारे जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, एकदम जीरो से उन्होंने उठ के आए हैं, मिसेस द्रौपदी मुर्मू. तो ये सब क्या है, दे हैव रिजन फ्रॉम द बॉटम रंग्स ऑफ द सोसाइटी. सम पीपल नेवर गेट द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप स्किल्स, बट कुछ लोग हैं जिनको ये स्किल डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, जो कि मार्केट डिमांड करता है. दे आर सिंपली टू पुअर, बहुत ही गरीब हैं, टू हैंडीकैप्ड. वो उनके पास बहुत सारी चीज नहीं है, और स्किल फॉर्मेशन टेक्स टू लॉन्ग. क्या होता है, गरीब लोगों का जब वो पैदा होते हैं और जब वो छोटे रहते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो उस टाइम में इंडिया में दे डोंट गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, बिकॉज द मेन थिंग्स विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ ग्रोथ ऑफ द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड are protein and fat, not carbohydrate. और ये जो प्रोटीन एंड फैट है, ये दोनों चीज हमारे देश में इट्स एक्सपेंसिव एंड द पुअर कैन नॉट अफोर्ड इट. बाय क्रिएटिंग, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उनका ब्रेन स्टंटेड हो जाता है, यू नो, लेस ग्रोन हो जाता है, विच इज कॉल्ड स्टंटेड. इसीलिए वो एक चीज को सीखने में बहुत टाइम लेते हैं. बाय क्रिएटिंग जॉब्स, मार्केट्स में बी एबल टू हेल्प इवन अनस्किल्ड पीपल. अगर वो मार्केट्स जॉब क्रिएट करता है तो अनस्किल्ड पीपल को भी वो जॉब दे सकते हैं. बट कैपिटलिज्म हैज ऑलवेज विटनेस्ड bursts of employment, यानी कभी कभार एम्प्लॉयमेंट ऐसे उठेगा, कभी कभार ऐसे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर गिरेगा, एंड समथिंग लाइक दिस, एंड समथिंग लाइक दिस. सो अजम्पशन इसमें क्या हो सकता है, देखते हैं हमारा अजम्पशन का ऑप्शंस क्या दिया हुआ है. Modern democracies rely on the market forces to enable them to be welfare states. Second option is market ensures sufficient economic growth necessary for democracies to be effective. Government programs are needed for those left behind in economic growth.
assumption valid कौन सा है? Government programs, market democracy is relied on the market forces to enable them to be welfare states. This has not been pointed out. यहाँ पर तो सिर्फ वेलफेयर स्टेट मेंटाली मार्केट के ऊपर छोड़ना है, उसके बाद तो टोटली मार्केट फोर्सेस के बारे में बात हुआ है. एंड मॉडर्न डेमोक्रेसी रिलाइज ऑन मार्केट फोर्सेस टू एनेबल देम, ये तो कहीं पर जिक्र नहीं हुआ है. Market ensures sufficient economic growth necessary for democracies to be effective. No. Democracies to be effective कोई यहाँ पर नहीं है. Yes, it ensures sufficient economic growth necessary for democracy, but to be effective, this has not been mentioned. So 2 is also incorrect. Government programs are needed for those left behind in economic growth. Yes, this can be assumed. The hidden fact is that people who are very poor, people who cannot afford to be, taking training and other things, upskill themselves to, make fit for the market, that's not there. So 3 is the only option. So answer will also be B, which means only 3. Which means only 3. Okay? So this is what is passage 19 about. It talks about, it starts with democracy, but उसके बाद it is talking about the free market. और जहाँ पर मार्केट में जो मेहनत करेगा उनका अपॉर्चुनिटी होगा कमाने का, ग्रो करने का. In our schools, passage 20, we teach our children all that is there to know about physics. So ये बात कर रहे हैं फिजिक्स का. Maths and history and what have you. But do we teach them about the bitter caste divide? हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, हम मैथ्स एंड बट हम कास्ट डिवाइड पढ़ाते हैं क्या? जाति के हिसाब से जो समाज में अंतर पैदा हुआ है और होके हैं वो पढ़ाते हैं. अबाउट द स्पेक्टर ऑफ famine that stalks large parts of our land. Spectre, the fear that stalks large parts of our land. इस देश में जो भुखमरी होता है उसके बारे में हम पढ़ाते हैं क्या? अबाउट जेंडर सेंसिटिविटी, पुरुषों को या लड़कियों को लड़कियों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, या लड़कियों को लड़कों से या महिला को पुरुषों से कैसा बर्ताव करना चाहिए, वो हम पढ़ाते हैं क्या? अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एथिज्म एज अ चॉइस. अगर आप चाहते हो तो आप भगवान को न भी मान सकते हो, इस सब के बारे में हम पढ़ाते हैं क्या? इक्वली इम्पॉर्टेंट, डू वी टीच देम टू आस्क क्वेश्चन, सवाल पूछने के लिए हम उनको पढ़ाते हैं. और डू वी टीच देम ओनली टू पैसिवली रिसीव आवर विजडम, पैसिवली रिसीव आवर विजडम, यानी हमारे जो ज्ञान है सिर्फ आप बैठो और उसको सुनो. फ्रॉम द कुकून्ड
cocooned means encapsulated. Covered. Of school, suddenly the adolescent finds himself or herself in the unfettered world of university. Uncontrolled. Here he or she is swept up in turmoils of ideas, influences and ideologies. यूनिवर्सिटी जब पहुंच जाता है तब आइडियाज, इन्फ्लुएंसेस एंड आइडियोलॉजीज उसको पूरा धोके एक अलग जगह लेके जाता है. फॉर समवन हु हैज बीन डिस्करेज्ड फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चंस एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जिसने अभी तक सवाल नहीं पूछा है, कोई ओपिनियन नहीं पूछा है, दिस ट्रांजिशन कैन बी पेनफुल. ये जो शिफ्ट है ये बहुत पेनफुल हो सकता है. सो इट इज टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट्स इन स्कूल्स not being exposed to questioning, exposed to latitude of ideas, जिसके वजह से वो एक ढक्कन के अंदर, वो एक डब्बे के अंदर बंद होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचता है. और यूनिवर्सिटी पहुंच जाने के बाद हालत खराब हो जाता है तब, जबकि ओशन का टाइड्स जैसा उनको अलग अलग चीज़ों के बारे में सुनने में आता है, ओपिनियन मांगा जाता है और वो कुछ नहीं कर सकता है वहाँ पर, क्योंकि उनको जिंदगी भर सवाल पूछने में मना किया गया है, राइट, ओपिनियन देने में मना किया गया है. तो उनके लिए ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सरसाइज हो जाता है, ये एक बहुत ही पेनफुल एक्सरसाइज हो जाता है, राइट. Which one of the following statements best reflect the central idea of the passage given above? So central idea इस passage का कौन सा बोल रहा है? School curriculum is not compatible with the expectation of children and parents. यहाँ पर कोई expectation के बारे में बताया नहीं गया है, right? यहाँ पर कोई एक्सपेक्टेशन के बारे में बताया नहीं गया है कि पेरेंट्स का क्या एक्सपेक्टेशन है. यहाँ पर पेरेंट्स के बारे में कुछ बात ही नहीं हुआ है, राइट. यहाँ पर बात हो रहा है, राइट, नॉट कंपैटिबल. कंपैटिबल इज नॉट मैचिंग. नॉट मैचिंग. सो दिस जो पॉइंट है, इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. Emphasis on academic achievements does give time for development of personality and skills. This also is not discussed. Preparing the children to be better citizens should be the responsibility of the education system. Vague generalization और पैसेज के साथ कोई रिलेशन नहीं है. To be a better citizen, the present world order demands societal and life coping skills. In addition, वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि उनको societal and life coping skills, यानी कैसे प्लेग के बारे, कैसे कास्ट डिवीजन के बारे में समझना है, जेंडर के बारे में, एक
पुरुष को एक महिला को कैसे सम्मान करना है और रिवर्स भी महिला पुरुष को कैसे सम्मान करे, राइट, एथिज्म क्या है, और ये सब चीज़ों के बारे में उनको जानकारी बहुत ज़रूरी है. So D actually gives the central idea of the passage. Next is passage 21. Best universities like Harvard and MIT, despite having the luxury of having some truly excellent teachers on their payroll, are increasingly embracing the flipped classroom format. तो ये सब जो वर्ल्ड का टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये लोग दे आर एम्ब्रेसिंग द फ्लिप्ड क्लासरूम फॉर्मेट. The students listen to video lectures at home and spend class time applying their knowledge. So they listen to the lectures, video lectures at home, and when they come to class, they apply their knowledge, solving problems, discussing examples, etc. Professors guide that discussion and fill in wherever necessary. प्रोफेसर उस डिस्कशन को गाइड करते हैं, जहाँ भी ज़रूरत पड़ता है उसको फिल इन करते हैं. Explaining those bits that seems to be eluding the students and throwing in advanced ideas that happen to be topical. This means कि वही चीज़ वो एक्सप्लेन करते हैं जो बच्चों के नज़र में नहीं आता है. Eluding is escaping. Eluding the students and throwing in advanced ideas. और कुछ नया एडवांस आइडियाज जो कि बच्चों को समझ में नहीं आता है, उसको प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है. These universities have made their video lectures available free for anyone in the world. Beautifully they have, made these lectures free. They're also encouraging colleges and universities all over the world to integrate these online courses into their own pedagogy. So वो लोग encourage कर रहे हैं, right? Colleges and universities all over the world. क्या करने का? Integrate these online courses into their own pedagogy. Pedagogy is the learning system. Picking the pieces that are appropriate for their needs, वही सब चीज़ को लेने के लिए, and build a package around them. So अलग अलग पीसेस लेके उसको एक साथ लाके उसका एक पैकेज बना के देना. Which one of the following statements
बेस्ट रिफ्लेक्ट द सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कौन सा वाला सबसे अच्छा रिफ्लेक्ट करता है? Efficacy of universities would be better in online mode of conducting classroom tuitions as compared to conventional methods. देखते हैं दोस्तों बाकी options. Availability of higher education can be made easier and cheaper without diluting the content. We need not invest much in infrastructure related to higher education and yet develop better human and social capital. Private sector institutions in higher education as well as coaching institutes can take advantage of this opportunity and thrive well. So, ये जो है फ्लिपेंट क्लासरूम फॉर्मेट जो है फ्लिप क्लासरूम, इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे अच्छा चीज़ जो हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल आइडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, राइट, एंड येट डेवलप बेटर ह्यूमन, यानी हम तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं और बेटर ह्यूमन बीइंग और ह्यूमन सोशल कैपिटल हम इसमें तैयार कर रहे हैं. सो दिस कैन बी प्रोबेबली द आंसर. आंसर इज सी, बिकॉज यहां पर देखिए ये जो पहला वाला है, ये जो पहला वाला है, राइट, दिस इज यू नो स्ट्रॉन्ग assumption, बट ये प्रैक्टिकली होगा कि नहीं होगा अभी तक हमें पता नहीं. अवेलेबिलिटी ऑफ द हायर एजुकेशन, यहाँ पर कंटेंट डाइल्यूशन का कुछ बात नहीं हुआ है. सो एक्सट्रानियस इंफॉर्मेशन है जो कि काम का नहीं है. C is the answer. So B is not the answer, A is not the answer, C is the answer. Private sector institutions in higher education as well as यहाँ पर coaching institutes का कोई जिक्र नहीं है. So naturally this also is not the answer. So basically talking about the advantages of having a semi-shift, a hybrid model between online and offline education where students वो घर में पढ़ेंगे, लेक्चर सुनेंगे और उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर वो कॉलेज आएंगे और फिजिकल मोड में वो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करेंगे. कुछ जगहों पे जहाँ पर समझने में दिक्कत होता है या कोई नया एरिया है या कोई लेबरेंथीनियन मॉडल है तो उसको प्रोफेसर लोगों से या सीनियर टीचर लोगों से समझेंगे एंड देन बी अ पार्ट ऑफ दिस साइक्लिकल मॉडल. सो पैसेज नंबर 21 actually talked about this model. Next 22. Our cities are extremely vulnerable to climate change because of large concentration. कारण क्या है? Vulnerable to climate change, large concentrations of population and poor infrastructure. You go to any city, आप देखे होंगे, अगर आप भी बड़े शहर में रहते हो देखे होंगे कि द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड हाउसेज, राइट, एंड पीपल स्टेइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर बहुत सारे जगह पे, राइट. एंड आज के डेट में इट्स नॉट ओनली इन मेट्रो सिटीज बट ऑल्सो इन बी टियर सिटीज. मोरओवर पॉपुलेशन डेंसिटीज आर इंक्रीजिंग इन देम. We have not yet developed the systems to address
क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, हमने अभी तक इसका क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट क्या होगा, ये जो क्लाइमेट इस कारण से चेंज हो रहा है उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसके ऊपर अभी तक हम लोगों ने कोई सिस्टम बनाया नहीं है कि इसको कैसे एड्रेस करें, कैसे इसका समाधान करें। Our cities contribute to 65% of the GDP. %65 हमारे इस देश में जो सिटीज़ हैं 65% GDP का वही कंट्रीब्यूट करते हैं। बट देयर आर नॉट इनफ फैसिलिटीज टू केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल, मगर लोगों का जो ज़रूरतें हैं उसको केटर करने के लिए खास कुछ है नहीं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ एयर क्वालिटी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनका लंग्स वीक है, बच्चे जन्म ले रहे हैं जिनका वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स नॉर्मल जो बर्थ में होगा, और उसके बाद शहर में रह रहे कि वो और भी वीक हो जा रहा है। दैट आर वाइटल टू आइडेंटिफाइंग सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। तो हमें वो सब इश्यूज देखना है जो कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में दे सकता है। वी नीड टू इन्वॉल्व सिटीजन्स इन सिटी प्लानिंग and create an ecosystem that meets the needs of the people. हमें क्या करना है, हमें इन्वॉल्व करना है सिटीजन्स को, बिकॉज डिफरेंट पीपल फ्रॉम द सोसाइटी विल हेल्प अस मेक अ बेटर system to address the climate change and create an ecosystem that meets the needs of the people. यानी कि कुछ सिस्टम बनाना है जो कि लोगों का जरूरतें पूरा करे। विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल रेफरेंस, जिसमें लॉजिक है और रैशनैलिटी भी है, दैट कैन बी मेड फ्रॉम द पैसेज अबव। आवर सिटीज नीड टू हैव वेल डिफाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप विद सफिशिएंट ऑटोनॉमी, absolutely non-contextual. Every increasing population densities is a hindrance in our effort to achieve sustainable development. अभी hindrance in our efforts, पॉपुलेशन तो बढ़ेगा, वो दरारें हैं, ये तो हमारे पैसेज में नहीं लिखा हुआ है। वी कैन नॉट लॉजिकली इन्फर दिस हिंड्रेंस इन आवर एफर्ट, सो दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। टू मेंटेन एंड डेवलप आवर सिटीज वी नीड टू अडॉप्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंटरवेंशंस। फर्स्ट क्लास जो कि बोला गया है, सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस वैसा चाहिए जो कि सस्टेनेबल हो सकता है। सो दिस वन इज द आंसर सी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड ऑफ डेवलपमेंट इज अ वायबल लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। दिस वंस अगेन इज अ एब्सोल्यूट स्टेटमेंट। Public-private partnership mode of development is a viable long-term solution for the infrastructure and sustainability problem of India. This is once again an absolute statement जो कि we cannot infer logically or rationally about this particular point. So passage 22 क्या बोल रहा है? Passage 22 is talking about cities में जो कंजेशन हो रहा है, ये जो पॉपुलेशन माइग्रेशन होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन सिटीज का कुछ कुछ जगहों पे हो जाता है, उससे क्लाइमेट चेंज होता है, इम्पैक्ट होता है।
harmful toxic gases, right? उसके बाद आपका बिकॉज ऑफ डेंस पॉपुलेशन और वेस्ट मटेरियल जो हैं, उसके बाद जो गार्बेज होता है, लेफ्ट ओवर्स होता है, वो सब का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है और वो फिर ड्रेन्स को क्लॉग करता है। फिर ड्रेन्स को क्लॉग करने के बाद आप लोग जानते होंगे रिसेंटली इन बैंगलोर व्हाट हैपेंड, देयर वाज अ ह्यूज फ्लड लाइक सिचुएशन विद इन द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड एरियाज ऑफ द सिटी, राइट, जहाँ पर कि अरबपति कोई रहते हैं और उनको फिर बोट में बैठ के, राइट, हैंड ओवर बोट को लेके इधर उधर जाना पड़ा, एंड ऑल दीज थिंग्स बिकॉज द सिटी has almost given up to the pressure of the population and the climate change, right? So answer is C, not D, sorry. अभी चलते हैं पैसेज 23. Nothing can exist in a natural state which can be called good or bad by common assent. So, ऐसा कुछ नहीं है जो कि नेचुरल स्टेट में रह सकता है जिसको हम गुड और बैड बोल सकते हैं एक कॉमन एसेंट में. Since every man who is in a natural state consults only his own advantage, जो natural state में है वो सिर्फ अपना advantage के बारे में ही सोचता है and determines what is good or bad according to his own fancy. ज़्यादा मिठाई खाना किसी आदमी ने सोचेंगे कि उनको मोटापे में धकेल देगा, वो मोटे हो जाएंगे. कुछ आदमी सोचते हैं नहीं, ज़्यादा मिठाई खाना ही चाहिए क्योंकि अपना आत्मतृप्ति होता है. एंड सो फार एज ही हैज़ रिगार्ड फॉर हिज ओन एडवांटेज अलोन, अपने बारे में, अपने एडवांटेज के बारे में जितना समय तक उनका सम्मान है, एंड होल्ड्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल टू नो वन सेव हिमसेल्फ बाय एनी लॉ, और वो अपने को जिम्मेदार समझते हैं इसके बारे में. एंड देयरफॉर सिन कैन नॉट बी कंसीव्ड इन अ नेचुरल स्टेट. इसीलिए पाप को हम कभी भी नेचुरल स्टेट में सोच नहीं सकते, बट ओनली इन अ सिविल स्टेट. विच इज डिक्रीड बाय कॉमन कॉन्सेंट व्हाट इज गुड और बैड. यहां पर एक कॉमन कॉन्सेंट है and each one holds himself responsible of the state to the state. तब जाके वो सिविल हो गया, व्यक्तिगत नहीं हुआ. सो उसमें अगर गड़बड़ होता है तो स्टेट के पास वो आदमी जिम्मेवार होते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द सेंट्रल आइडिया. सेंट्रल आइडिया क्या है? The conceptions of what is right or what is wrong exist due to the formation of a state. ये क्या बात है? The conception of what is wrong and what is right exists due to the formation of a state. Unless a ruling authority decides as to what is right, what is wrong, no man would be morally right. No, this is not being mentioned. Not within the purview
Man is inherently immoral and selfish. Extreme option. The idea of what is right or wrong is necessarily for the survival. Stretched imagination. ऐसा नहीं है. Stretched imagination. Answer is A. Conception of what is right or what is wrong exists due to the formation of a state. State बनता है, right? तब जाके ये conception लागू होता है. अदरवाइज पर्सनल लेवल पे टोटल अलग अलग होता है लोगों का. सो पैसेज 23 इस चीज के बारे में बताया. Passage 24, in the immediate future we will see the increasing commodification of many new technologies, artificial intelligence and robotics. In the immediate future we will see the increasing commodification of many new technologies, artificial intelligence and robotics. This will be the revolution, right? (3D) manufacturing, custom-made biological and pharmaceutical products, very important. आपके लिए अलग दवाई बनेगा, मेरे लिए अलग दवाई बनेगा, क्योंकि आपका बीमारी अलग टाइप का है, मेरा बीमारी अलग टाइप का है. दोनों का बीमारी शायद सरदर्द है, दोनों का हार्ट का प्रॉब्लम है, मगर एग्जैक्टली मेरा जो प्रॉब्लम है उसी के बेसिस के ऊपर मेरा दवाई बनेगा, जो कि मेरे को जल्द से जल्द राइट रिकवर करने में मदद करेगा. लीगल ऑटोनोमस वेपन्स एंड ड्राइवरलेस कार्स, साथ में ये भी होगा. बहुत ही भयंकर ऑटोनोमस वेपन्स बनेगा, ड्राइवरलेस कार्स बनेगा. दिस विल पोज conundrums. Conundrums is very complex problem.
almost impossible to solve. Conundrum. The moral question of how a driverless car will decide between hitting a jaywalker and swerving the damaging the car has often been debated. So, jaywalker. Jaywalker is someone who wriggles through cars on traffic So, if the driverless car is in Dublin, who would take the decision? डबलिन में अगर गाड़ी है तो डिसीजन कौन लेगा? द आयरिश गवर्नमेंट और द कार्स ओरिजिनल कोड राइटर इन कैलिफोर्निया. तो ये जो एक्सीडेंट होगा तो उसके ऊपर डिसीजन कौन लेगा? जिसने कोड लिखा है उस गाड़ी को चलाने का, या आयरिश गवर्नमेंट डबलिन में जो कि एक्सीडेंट हुआ है, और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन हैदराबाद जिसने प्रोग्राम बनाया है इसका, तो वो लेगा क्या डिसीजन? टू हुम मेंटेनेंस इज आउटसोर्स्ड. मेंटेनेंस जो है वो हैदराबाद वाला सॉफ्टवेयर कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, क्योंकि ये गाड़ी में प्रॉब्लम हुआ तो मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो सकता है. If different national jurisdictions have different fine print on prioritizing human life, how will it affect insurance and investment decisions, including translational ones? तो उसके साथ साथ ह्यूमन लाइफ और उसका इंश्योरेंस आ जाता है, उसका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस आ जाता है, और ये सब कुछ एक ट्रांसलेशनल बेसिस पे होगा, क्योंकि उस गाड़ी के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग देश में बनेंगे. इट माइट बी अ ब्रिटिश कार विच रन्स इन द रोड्स ऑफ डबलिन, दैट इज आयरलैंड, एंड उसका जो कोडिंग हुआ है वो कैलिफोर्निया में कोई आईटी कंपनी में हुआ है, और उसका मेंटेनेंस आउटसोर्स हुआ है हैदराबाद में. Which of the following statements best reflect the rational, acceptable, plausible and practical implication? Plausible means feasible. Feasible, right? So, too much globalization is not in the best interest of any country. Doesn't make much of sense. This is a vague statement. Modern technologies are increasingly blurring the economic borders. Yes, they are. और यहाँ पर आयरलैंड, डबलिन, कैलिफोर्निया और इसके बारे में जो हैदराबाद के बारे में बात हुई उसी से पता चल रहा है. So 2 is one of the rational, plausible and logical implications. Innovation and capital have impinged on the domain of the state. Yes, इनोवेशन और कैपिटल ये तो स्टेट के डोमेन में अभी इम्पिंज्ड हुआ है. सो 2-3. पब्लिक पॉलिसी ऑफ एवरी कंट्री शुड फोकस ऑन डेवलपिंग इट्स ओन सप्लाई चेन. नॉन कॉन्टेक्चुअल, वेग, कोई मीनिंग नहीं है.
Geopolitics will have to reconcile many ambiguities and uncertainties. Yes, geopolitics will have to reconcile, जो कि last part में बोला गया है. Right? So fifth is also the answer. Answer is C. Answer is C. तो ये था हमारा पैसेज 24. इस पेपर का जो लास्ट पैसेज है उसको आज हम करेंगे. The resolution of bankruptcy cases of India ranks under the Insolvency and Bankruptcy Code help bring non-performing assets situation under some control. Right? Insolvency and Bankruptcy Code जो अभी बना है उससे क्या हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होता है? वो होता है कि आपका बैंक अगर 100 रुपया लोन देता है और वो लोन जीरो रिकवरी होता है तो उसको हम बैड डेट या बैड लोन के नाम से जानते हैं. और वो जो है वो आपका नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाता है, क्योंकि बैंक में अगर कोई पैसा बैंक से लोन लिया है और उसका अगर इंटरेस्ट नहीं दिया जा रहा है तो बैंक चल नहीं रहा है. ओके, बैंक नहीं चल सकता है. डिस्पाइट द लो पेस ऑफ रेजोल्यूशन बाय द नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल, लो पेस है, रिजॉल्व करने में बहुत टाइम लग रहा है. द कोड कैन बी हेल्पफुल क्लीनिंग अप बैंक बुक्स. The code can be helpful in cleaning up बैंक बुक्स इन फ्यूचर साइकिल्स. तो आगे जाके बैंक बुक्स क्लीन अप कर सकता है फ्यूचर क्रेडिट साइकिल्स के लिए. द रिकैपिटलाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को फिर से रिकैपिटलाइज करना. टू एंड इंक्रीज एंड हेल्प इंक्रीज द capital cushion of banks and induce them to lend more and boost economic activity. तो इससे क्या होगा, रिकैपिटलाइजेशन होने से बैंक्स के पास और पैसा होगा तो और लेंडिंग वो शुरू कर सकते हैं. बट बैड डेट रेजोल्यूशन एंड रिकैपिटलाइजेशन आर ओनली अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन. दे आर ओनली अ पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, as they by themselves can do very little to rein means control. Reckless lending, reckless, irresponsible,
that has pushed the Indian banking system to its current sorry state. Unless there are systematic reforms that address, there should be systematic reform. System में change लाना है. The problem of unsustainable lending, future credit cycles will continue to stress the banking system. Future का जो credit cycles है, वो banking system को बहुत stress करेगा. Which of the following statement best reflects the most logical and practical suggestion implied by the passage given above? Lending by the banks should be closely monitored and regulated by the central government. No, ये वाला नहीं होगा. This is a very general statement. Lending by the banks should be, the interest rate should be kept low so as to induce banks to lend more. Now this has not been mentioned, right? Interest rate के बारे में कहीं पर mention नहीं हुआ है, so not mentioned. Merger of many banks into a few large banks alone in the long-term solution to make them viable and prevent their bad performance. So, merger बहुत important नहीं है, इसमें से long-term solution नहीं निकलेगा. Not hinted in the passage. Last वाला ही आंसर होता है because it sums up the whole thing properly. Indian banking system requires structural reforms as a long-term solution. यहाँ पर clearly बोला गया है systematic reform for bad loan problems. So answer is D. Rest वाले जो हैं वो आंसर नहीं होगा. So this particular thing actually is talking about, this particular passage is talking about the flaws in the banking system जिसके वजह से हमारा non performing assets बढ़ा हुआ है, right? And banks का recapitalization ज़रूरी है जिससे कि banks आगे जाके better perform कर सके, फिर से लोन दे सके, वगैरह वगैरह चीज़ बैंक कर सके. चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेपर पे, राइट? नेक्स्ट पेपर पे चलते हैं. ये वाला पेपर में हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर चुके हैं. सो विल गो टू द नेक्स्ट पेपर.
Passage 1. In India, over the last decade or so, labor has been departing agriculture. Labor has been departing agriculture. But is only going to construction and unregistered manufacturing, which are not markedly better jobs. कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है construction and unregistered manufacturing. Right. Services where labor tends to be more productive are not generating the additional jobs the country needs. Services नहीं नया जॉब जनरेट कर रहे हैं. India will need 24 million or so jobs over the next decade. 24 million jobs चाहिए. Right? The new sector, e-commerce, can at best close only half the job gap. E-commerce half job gap को close कर सकते हैं. Only those sectors that drive domestic demand such as health and education, ये सेक्टर में अगर नौकरी हुआ तो it can comfortably fill the other half. So this is talking about the nature and opportunities of employment. Nature and opportunities of employment.
तो इसमें हम देखेंगे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इम्प्लाइड, सबसे अच्छा इसमें कौन सा लग सकता है, बेस्ट इम्प्लाइड. स्ट्रॉन्ग मेजर्स need to be taken to reduce the rural to urban migration of labor. So in India over the last decade or so, labor has been departing agriculture. So which one of the following is best implied in the passage? Strong measures need to be taken to reduce the rural to urban migration of labor. So ये पहला वाला पॉइंट है. So strong measures के बारे में इस पैसेज में implied नहीं है, right? It is talking about generation of employment, right? So naturally this one is out of the review. The working condition in construction and unregistered manufacturing needs to be improved. This also is addressing one part of the passage. Service sector has been reducing the problem of employment. Yes, it is, but this is just partial. Increased social sector spending is imperative for large scale job creation. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब जो है, सो आंसर इज डी. दिस इज इम्प्लाइड इन द पैसेज कि बाकी सब तो ठीक है, बट सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि आप यहाँ पर पैसेज को वो कर सकते हो, जॉब क्रिएशन को ठीक कर सकते हो. सो आंसर इज D. Next passage is, in India, the current focus on the right to privacy is based on some new realities of the digital age. Now digital age जो आ चुका है, इसमें एक इंसान का प्राइवेसी के बारे में बताया गया है.
a right is a substantive right only if it works in all situations and for everyone. एकदम सही है, राइट वो सब्सटेंसिव राइट होगा जब वर्क्स इन ऑल सिचुएशन, सब सिचुएशन में काम करेगा और सबके लिए काम करेगा. A right to free expression for an individual about her exploitation, for instance, is meaningless without actual availability of security that guarantees that private force cannot be used to thwart. Thwart means forcibly stop. Cannot be used to thwart this right. एक लेडी अगर उनका फ्री एक्सप्रेशन चाहिए, उनका एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, राइट, वो मीनिंगलेस होता है अगर सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं है उनके पास. The role of the state therefore is not just to abstain from preventing rightful free expression. स्टेट को फ्री एक्सप्रेशन को बंद करने के लिए कोशिश करने से नहीं होगा, from but also to actively ensure that private parties, जो प्राइवेट पार्टीज हैं वो भी बंद ना कर पाए. किसी का प्राइवेट, किसी का एक्सप्रेशन जो है, फ्री एक्सप्रेशन जो है, वो ना तो स्टेट रोकेंगे ना कोई प्राइवेट पार्टी रोकेंगे, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ द अबव पैसेज क्या अजम्पशन हम कर सकते हैं? स्टेट शुड हैव सम इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर इट्स अप्रोप्रिएट रोल in a digital society. This is the first. State should ensure that private parties do not violate the citizens' right to privacy. Second, digital economy is not compatible with the idea of not violating the citizens' privacy. State should have some institutes to ensure its appropriate role in a digital society. ये तो नहीं बोला गया है, बोलता है स्टेट को एब्स्टेन करना है, बट उनको कुछ इंस्टीट्यूशंस तैयार करके इस चीज को करवाना है, ये तो नहीं बोला गया है. स्टेट शुड एंश्योर दैट प्राइवेट पार्टीज do not violate, but also actively ensure are not able to the citizens' right to privacy. Two तो है, digital economy is not compatible with the idea of not violating. This is not mentioned in the passage. So only 2 is the answer, D.
तो पहला वाला हमारा जो पैसेज था वो था आपका लेबर के ऊपर कि जॉब कैसे मिलेगा उसके ऊपर। दूसरा वाला जो पैसेज था वो था राइट टू प्राइवेसी के ऊपर। राइट टू प्राइवेसी और स्टेट का रोल क्या होना चाहिए, प्राइवेट का रोल कैसे। आज के लिए हम लोग यहीं तक करेंगे, राइट। वी विल कंटिन्यू विथ आवर CSAT क्लासेज इन फ्यूचर। सो मैं आप लोगों से आज विदा लेता हूँ एंड वी विल मीट सून। राइट में साउंड का